In this video, we are going to study about some of the important questions that regularly comes for CTT exam, and all these questions are related with educational psychology. Let's start. The first question is who proposed the law of association? Law of association was proposed by Aristotle. Aristotle, the famous philosopher, उन्होंने प्रपोज किया था लॉ ऑफ एसोसिएशन. उसमें कॉन्टीन्यूटी आती है, रिपीटिशन, अटेंशन, प्लेजर, पेन एंड सिमिलैरिटी. दीज आर द बेसिक थिंग्स ऑफ लॉ ऑफ एसोसिएशन. मॉडर्न लर्निंग थियोरी का बैकबोन माना जाता है दिस लॉ ऑफ एसोसिएशन को. दिस लॉ ऑफ एसोसिएशन इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ मॉडर्न लर्निंग थियोरी. Second question, who is known as father of English psychology? Father of English psychology, John Locke. John Locke is considered to be father of English psychology. Next question, what is the meaning of the term tabula rasa? Tabula rasa का मतलब क्या होता है? Tabula rasa का मतलब होती है blank slate, blank tablet और blank slate. That is the word term meaning of tabula rasa. Who introduced the term tabula rasa? It was introduced by John Locke. John Locke, father of English psychology. Father of English psychology John Locke. उन्होंने propose किया था the term tabula rasa. According to him, the mind of a child, that is by birth, it is like a blank slate. It does not have any impressions on that. It is just like a blank slate. Baki, all the impressions are created later only. So this term tabula rasa was introduced by John Locke, who is considered to be the father of English psychology. According to that, by birth, the mind of a child is considered to be a blank slate. Next question, who is known as father of educational psychology? Answer is Johann Herbart. Father of educational psychology is Johann Friedrich Herbart. He was a German philosopher, psychologist and founder of pedagogy as an academic discipline. वो एक फ़िलोसोफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे. उन्होंने पहले पेडागोजी को एक एकेडमिक सब्जेक्ट, एकेडमिक डिसिप्लिन बनाया. Pedagogy as an academic discipline. So Johann Friedrich Herbart is known as father of educational psychology. He was a German philosopher, a psychologist, and he was the founder of pedagogy as an academic subject. Next question, who is known as father of English psychology? The famous series lectures Talks to Teachers on Psychology OS 2. ये series of lectures किसके था? Talks to Teachers on Psychology. It was by William James. William James एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था. उन्होंने बहुत सारे वर्क्स एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी किया है. उनकी सीरीज ऑफ लेक्चर्स था टॉक टू टीचर्स ऑन साइकोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी? William James. So father of American psychology is William James, and his series of lectures was known as Talks to Teachers on Psychology. Next question, which was the first intelligence test and was the first to distinguish between normal children and those with developmental disabilities? This answer is Binet-Simon test. Alfred Binet was a French psychologist. उन्होंने इन्वेंट किया था फर्स्ट प्रैक्टिकल IQ टेस्ट, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट टेस्ट. IQ टेस्ट वी आर ऑल फेमिलियर विद द वर्ड IQ टेस्ट. वो IQ टेस्ट पहले इंट्रोड्यूस किया था एल्फ्रेड बिने ने. उनका दूसरा एक्सपेरिमेंटल टेस्ट है दिस वन, an intelligence test which distinguishes normal children from developmental disabilities children. जो नॉर्मल चिल्ड्रन होती है, जो बच्चा जिसको थोड़ा डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती है, वो दोनों में सेम इंटेलिजेंस नहीं होती है.
तो वो फाइंड आउट करने में जो इंटेलिजेंस टेस्ट होती है वो डेवलप किया था दिस बिने साइमन मिलके. ही वॉज द बडी ऑफ एल्फ्रेड बिने साइमन वॉज द बडी और को-वर्कर को रिसर्चर दोनों मिलके ये टेस्ट इन्वेंट किया था. दैट इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन हैविंग सम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़. सो द टेस्ट वॉज डन बाय बिने एंड साइमन. Next question, who proposed the law of effect? It's a very important question. Edward Thorndike. Thorndike ने develop किया था the law of effect. Edward Lee Thorndike was an American psychologist. उन्होंने propose किया था the law of effect. Law of effect states that behaviors are followed by good consequences are likely to be repeated in future. Those behaviors which are followed by good consequences, that is आपने motivation दिया, reinforce किया, positive reinforcement किया, तो वो action बाद में भी बच्चा repeat करने का chances ज़्यादा होती हैं. If you are motivating a child, if you are giving positive reinforcement for a child, the child will be repeating the action again and again. That is the law of effect. सो थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफ़ेक्ट के द्वारा ये प्रपोज किया था कि मोटिवेशन और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जब हम देते हैं बच्चे वो पर्टिकुलर एक्शन फ्यूचर में भी रिपीट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स? Answer is Benjamin S. Bloom. Taxonomy of educational objectives. Educational objectives को classify किया था. Taxonomy means classification. Taxonomy of educational objectives. It was done by Benjamin S. Bloom. It is known as Bloom's taxonomy. It's a set of 3 hierarchical models. It is used to classify educational learning objectives into levels of complexity and specificity. The 3 levels covers the learning objectives in cognitive domain, affective domain and psychomotor domain. These are the 3 different domains. Cognitive domain, that is related with intelligence. Affective is related with emotions and feelings, and psychomotor is related with bodily kinesthetic, sensory domains. So हमको पता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव नहीं है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होती है. फर्स्ट वन इज इंटेलिजेंस, that is intellectual domain. Second one is affective, that is feelings and senses, and another one is psychomotor domain, physical exercise and all. So these are the classification. Bloom's taxonomy and the cognitive domain list has been primary focus. Next one, who developed the theory of cognitive development? This is also another very important question. Jean Piaget is the answer. Piaget developed the theory of cognitive development. Piaget was a French psychologist, and his work on child development is very famous. Piaget's theory of cognitive development and his epistemological view are together called the genetic epistemology. ये भी आ सकता है. genetic epistemology किसका था? Jean Piaget. And 2 terms which are related with genetic epistemology is assimilation and accommodation. Assimilation and accommodation is related with Jean Piaget. उसकी cognitive development theory के से related है assimilation and accommodation. So Jean Piaget theory of cognitive development, genetic epistemology and assimilation and accommodation, all these terms are related and very important. Next question, who proposed the theory of multiple intelligence? Who proposed the theory of multiple intelligence? Answer is Howard Gardner. Howard Gardner considered intelligence as a combination of different factors. There is only one factor or intelligent factor. ऐसा एक ही intelligent factor ऐसा कुछ नहीं है. इंटेलिजेंस मीन्स इट्स अ बहुत सारी फैक्टर्स होती है, टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट द इंटेलिजेंस. अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्टनर देयर आर 8 डिफरेंट इंटेलिजेंसेस.
वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जो भाषा यूज़ कर सकता है, इट इज़ रिलेटेड विथ लैंग्वेज, वर्बल लिंग्विस्टिक. अनदर वन इज़ म्यूज़िकल रिथमिक, दैट इज़ म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, जो गाना गा सकता है उसमें इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा. विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, जो चित्र बना सकता है, दैट इज़ दोज हु कैन ड्रो वेल, और दोज हु कैन थिंक in form of pictures. They will be imagining in the form of pictures everything. Another one is logical mathematical. They'll be having an intelligence of logical and mathematical. Some people will be having bodily kinesthetic intelligence, psychomotor domain. They will be great in their physical activities. And interpersonal intelligence means those people, just like advocates or the politicians, they are very efficient in treating other people. Such sort of intelligence is known as interpersonal intelligence. दूसरों को कैसे हैंडल कर सकता है. Next one is intrapersonal intelligence. Those who are able to introspect ourselves. एक पर्सन अपने आप देख सकते हो हमारी कमी क्या है, हमारी ये क्या है. सो दैट इज़ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, दैट इज़ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, दैट इज़ द लास्ट वन. नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो एनवायरमेंटलिस्ट होती है, नेचर की तरफ होती है, एवरीथिंग दे विल बी रिलेटिंग विथ नेचर की तरफ देखने वालों को. सो अलग अलग इंटेलिजेंस होती है. देयर इज़ नॉट ओनली वन इंटेलिजेंस फैक्टर. ये प्रपोज किया था हॉवर्ड गार्डनर ने, इसकी थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. तो देयर आर 8 फैक्टर्स. मल्टीपल इंटेलिजेंस में उन्होंने 8 इंटेलिजेंस के बारे में बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज नेम द जर्नल इन विच द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज पब्लिश्ड. This theory of multiple intelligence was first published in a journal called Frames of Mind. गार्डनर का एक मैगज़ीन जर्नल था फ्रेम्स ऑफ माइंड, उसमें ये पहले पब्लिश हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर प्रोग्रामिंग ऑफ लर्निंग वॉज प्रपोज बाय. दिस इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग. इन प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम के रूप में हम लर्निंग करवा रहे हैं. दैट इज़ लर्निंग कैन बी अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स. So the linear programming, the word itself is in a line, linear, there is no branching. Linear means from start to the end in one line, in one sequence it will be following. That is linear programming. वो B.F. Skinner, a behaviorist, famous behaviorist B.F. Skinner ने वो propose किया था. And the last question, who proposed the branched programming of learning? Branched programming, it is another काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ लर्निंग दैट इज़ ब्रांच्ड. उसमें से बहुत सारे ब्रांचेस होती है. वो ब्रांचेस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे सकते हैं. फिर हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हर एक ऑप्शन उधर क्लियर करके जाना पड़ता है. सो दैट काइंड ऑफ इज़ ब्रांच्ड, दैट काइंड ऑफ लर्निंग इज़ ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग लर्निंग. हु प्रपोज द ब्रांच प्रोग्रामिंग ऑफ लर्निंग? आंसर, नॉर्मन क्राउडर ने ये प्रपोज किया था. So linear programming was proposed by B.F. Skinner and branched programming was proposed by Norman Crowder. Hope you enjoyed this. Hope you understood the basic things. We discussed nearly 15 questions. Okay, if you like, please subscribe my channel. We'll be meeting in another video. Bye.